Hello friends, welcome to our channel Study Tech. This is our first video of our channel, so please forgive me for if I made any mistakes and all, and please do like, share and subscribe my channel as well. Click on a bell icon to get latest video updates. So let's get start from the introduction part of Indian history. Okay, what the first meaning, that is what is the meaning of history and what is history. Okay, so history is a study of past. Okay, study of past, we call them history. Okay, it is come from the Greek word which is historia, which meaning research, inquire and investigation. Okay, the knowledge which we get from acquisitions of investigations, research and inquire inquiry, that is called historia. Okay, so who is the father of history? Herodotus. Herodotus, whose life period between 484 BC to 425 BC. Okay, he is the father of history. Okay, and he wrote one book. He wrote only one book, that is Histories. Okay, which gives a background or events of Greek Iranian War. Okay, and many more, like German historian like such as Leopold von Ranke is also known as the father of modern history. Okay, so many more thinkers, many more political, most famous historians, or we can say that philosophers who gave ideas related to this history. That so first was Hazel was he was a Greek German philosopher who gives the ideas related to history, that history repeat itself. Okay, history अपने आप में repeat करती है. Okay, and later on the this later German philosopher Karl Marx, who get extended the line of this history repeat itself, that history repeat itself. First it's tragedy and second it's farce. Okay, so here the meaning of tragedy. What is the meaning of tragedy is very important. Tragedy is that the event causing great suffering destruction. ठीक है, ऐसा कोई इवेंट जो ग्रेट सफरिंग डिस्ट्रक्शन से कॉज हुआ हो. ठीक है, बहुत ही हार्श कंडीशन से जाके जन्मा हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेजिडी. एंड ठीक है, एंड व्हाट इज़ फार्स? अ कॉमेडी इन्वॉल्विंग रिडिकुलस सिचुएशन. ठीक है, ऐसा कॉमेडी इन्वॉल्व है किसी हार्श कंडीशन में या फिर रेडिकुलस सिचुएशन में, उसको हम फार्स बोलते हैं. Okay, so many more British historian philosopher gives their ideas related to history. Okay, so now we get now started a system of dating. Okay, so BC and AD, as we all know, BC is acronyms of before Christ. Okay, this is a English phrase meaning before the birth of Jesus Christ. BC, which stand for before Christ. Okay, which phrase the meaning that BC is before the birth of Jesus Christ. Okay, so here are some examples which is related to BC. That is, Gautam Buddha was born in 563 BC and died in 483 BC. Alexander the Great was was born in 356 BC and died in 323 BC. So AD is acronym to the Anno Domini. Okay, which begins with the birth of Jesus Christ, is known as Anno Domini. Okay, here are some examples of Kusana rulers. Hazrat Muhammad. Okay, who was born in 570 AD and died in 632 AD. Okay, so this is the timelines which is displaying here, like from 0 BC is going in the decreasing order, just such as 5 BC, 4 BC, 3 BC, 2 BC and 1 BC. Okay, and another is just like in AD, which is in increasing orders. Okay, like 1 AD, 2 AD, 3 AD, 4 AD and 5 AD. So here it gives a vast introductions of this increasing and decreasing manners, that after 5 BC, 4 BC will come, 3 BC will come, then after 2 BC will come, then after, and 1 BC, and after AD 1 BC, 1 AD, after that
2 AD, 3 AD, 4 AD and 5 AD. Okay, so here gives vast destruction, matlab here gives it gives in detail. Okay, so let's understand the time glossary of the periods. Okay, so the decade is the period of 10 year. ठीक है, the period of 10 years, the time span of period of 10 years we call them decades. Okay, first 50 years of a century, एक सेंचुरी के पहला 50 years को हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ, और उसी सेंचुरी के लास्ट 50 years मतलब आफ्टर 50 years 51 to 100 years, that is called as the second half. ठीक है, and a complete years of 100 years, complete periods of 100 years, as we call them century. Okay, millenniums, it means the period of thousands years. ठीक है, time period of 1000 years we call them millennium. Okay, so here given the examples like first decade of 20th century is the period of 1900 180 to 1910. So giving the examples over here. Okay, so we not need to know them. Okay, as we all know. So some of the important eras like Kali, which begins 20 years after the end of महाभारत wars. ठीक है, महाभारत वॉर के 20 साल के बाद काली पीरियड्स, काली era was started. ठीक है, after that many eras were established like Sakas, Gupta's period, Hers periods, Lakshmana period, Ilahi and all. ठीक है, okay. So we're going to study one by one as later on. Okay, so one of the most important we have to study that Saka and Gupta and Harsa. Okay, Saka, which was also known as Scythians. Okay, उन्होंने बाद में जाकर ये इंडो ग्रीक्स जो सेटल थे ऑफ अबाउट विच इज़ सो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में वो जाके इस्टेब्लिश होते हैं बाद में, फिर लेटर दे इन्वेज करते हैं, वो इन्वेजन करते हैं, इंडिया में अटैक करते हैं. आफ्टर दैट वी विल स्टडी इन आर वीडियोज. ओके, so let's study about calendars. Okay, like Georgian calendars, which gets modified from Christian calendars. Okay, and after Christian calendars was modified form of Julian calendar. Okay, so the first calendar was Julian calendars, which get modified and later convert into Christian calendar, and Christian calendars get modified and convert in the form of Georgian calendars. So we are throughout the world we are using Georgian calendars. Okay, so national calendars. What was the national calendars? The Saka Samvata is used in some of the government sector. Okay, Saka Samvata is a national calendar which are using in some of the governmental sectors officially. Okay, whereas Georgian calendars is used everywhere practically. ठीक है, Georgian calendars का यूज हर जगह है practically. Okay, so here are some of the conversions of eras of, ठीक है, कैसे conversions हुए eras के, some of the points which have written here. Okay, so now let's focus on the periods. Okay, baptite division. What is baptite bipartite divisions? Okay, bipartite divisions is the history is generally divided into two periods. Okay, history is divided into two periods, that is prehistoric and historic. Okay, बाइपटाइट डिविजन्स में क्या हुआ, हिस्ट्रीज को दो पार्टों में बांटा गया, जैसे कि प्री हिस्टोरिक डिविजन्स में और प्री हिस्टोरिक पीरियड्स में और हिस्टोरिक पीरियड्स में. ठीक है, व्हाट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड्स? ओके, द पीरियड्स विच हैव नो रिटन एविडेंस दैट वी कॉल देम प्री हिस्टोरिक पीरियड. मतलब कि ये ऐसा पीरियड था जिसमें हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं थे. वी डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ रिटन एविडेंस इन दिस प्री हिस्टोरिक पीरियड. दैट्स वाई वी कॉल देम एज अ प्री हिस्टोरिक पीरियड्स. ओके, एंड इन दिस इन द पीरियड ऑफ the historic period, the periods that have a written evidence. ठीक है, हमारे पास written evidences थे जिससे हमने डिसाइफर किया. many of the scripts में लिखे हुए थे, उसे हमने डिसाइफर करके हमने डिसाइफर किया. आफ्टर दैट वी गेट ट्रांसलेटेड एंड डिसाइफर्ड इनटू languages. Okay,
इन अदर वर्ड्स में क्या बोल, द पीरियड्स बिफोर द बिगनिंग ऑफ राइटिंग, ठीक है। सो प्री हिस्टोरी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा पीरियड जहाँ से हमने राइटिंग की शुरुआत की, लिखना शुरू हुआ था, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड प्री हिस्टोरिक। एंड द पीरियड्स आफ्टर द बिगनिंग ऑफ राइटिंग हिस्टोरिक, ठीक है। लिखने के बाद के जो पीरियड्स थे उनको हम क्या बोलते थे, हिस्टोरिक पीरियड्स, ओके। एंड द अदर बाय अनदर वर्ड इज दैट ट्राइपेटाइट डिवीजन। ट्राइपेटाइट डिविजन्स के हिसाब से, मतलब उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग टू ट्राइपेटाइट डिविजन्स, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड, दैट इज प्री हिस्टोरिक, ओके, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक, ओके। प्री हिस्टोरिक पीरियड्स क्या होते थे, प्री हिस्टोरिक में विच वी डोंट हैव एनी रिटन एविडेंस, हम बस उसके इंस्क्रिप्शंस, हमारे पास कुछ नहीं थे, मतलब कोई लिटरेरी सोर्सेज नहीं थे हमारे पास जिसमें हम लोग उनको, बस हमारे पास सम ऑफ द एविडेंस लाइक एग्जांपल लाइक स्टोन्स, इसको हम लोग इस स्टोरी को हम लोग हिस्ट्रीज को बोलते हैं हम लोग स्टोन पीरियड, ठीक है। कुछ हमारे पास ऐसे एविडेंस थे जैसे हमने उसको डिसाइफर भी नहीं कर पाए, बट स्टिल वी दैट्स वाई वी रिकॉग्नाइज देम एज अ प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड्स में क्या हुआ, द पीरियड्स विच क्या हुआ कि ये ऐसा पीरियड था, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वर टाइम पीरियड्स ऑफ बिटवीन 2500 BC टू 600 BC, ओके। इस पीरियड में वी हैव रिटन एविडेंस, ओके, बट देयर स्क्रिप्ट, जो जो जिस लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था, देयर स्क्रिप्ट था वो दे, मतलब कि दे हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड, ओके, डिसाइफर्ड और इन रिटन डॉक्यूमेंट्स हैव नॉट बीन कन्फर्म्ड विथ आर्कोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। हम जो, मतलब कि इसमें रिटन एविडेंस वी हैव, ठीक है, बट वी हैव नॉट एनी डिसाइफर्ड लैंग्वेज। जो इसकी स्क्रिप्ट थी उसमें हम उनके जो स्क्रिप्ट थे वो ऐसे लैंग्वेजेस में थे जिनका हमने डिसाइफर अब तक नहीं किया था, या फिर कोई उसके आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस उसके हिसाब से उसके थे नहीं, ठीक है। हिस्टोरिक पीरियड्स, इन दिस हिस्टोरिक पीरियड्स द टाइम पीरियड्स बिटवीन 600 BC टू टिल नाउ। सो दिस पीरियड्स विच वी हैव रिटन एविडेंस, ठीक है, बहुत सारे रिटन एविडेंस अवेलेबल है हमारे पास, जैसे महाजनपद पीरियोडिक्स टू टिल डेट नाउ, ठीक है। एंसेंट इंडिया, so in chronology the term this Indian history is divided into 3 periods, that is ancient India, medieval India and modern India. So let's see some time periods of this. Ancient India was the beginning to till that 647 AD, okay, from the lithic stone age period to the death of Harshvardhana, ठीक है। This was the time period which started from the lithic stone, ठीक है, the Paleolithic, okay, Paleolithic periods to the till the death of Harshvardhan, okay. So and the second, the medieval India, which the time periods between the 647 AD to 1757, from the death of Harshvardhan to the battle of Plassey, ठीक है, Plassey. This was the time period between the death of Harshvardhan to battle of Plassey, ठीक है। And modern India which get from the 1757 to till date now, okay. So they are the ancient India, some of the time period of ancient India, okay. ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर, मतलब कि हम ये बोलते हैं कि ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर टूल्स के हिसाब से हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड्स को टूल्स के हिसाब से 3 भागों में बांट दिया था, दैट इज लिथिक पीरियड्स, कॉपर पीरियड्स एंड आयरन पीरियड्स, ठीक है। उसको हम बाद में बोलते हैं, जैसे कि हम बाद में उसको जाके पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है। हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर टूल्स के हिसाब से हमने इनके डिविजन्स कर दिए। जैसे फर्स्ट था पैलियोलिथिक, बाद में हम इसको पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, व्हाट इज़ द टर्म पैलियोलिथिक, ओके, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ओके। So here are the let's start from the ancient India. Let's get some point from ancient India. The first is historical sources. The sources that give informations about the event of past times are known as historical sources. मतलब कि ऐसे sources which get informations about the event of the past time, ठीक है, ऐसे sources जो हमको past time के events के कुछ informations देते हैं, okay, that is called as the historical sources, okay. There were 2 historical sources, that is literary and archaeological, ठीक है। With the comparisons of literary sources, archaeological sources is believed more reliable because it is impossible to change it, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज के कंपैरिजन में
archaeological sources believed more reliable. It gives more importance. आर्कोलॉजिकल सोर्सेज को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता था, ठीक है, वो रिलायबल था, ठीक है, बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल टू चेंज इट, ठीक है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस जो ऐसे मिल जाते थे जिनको बदलना ही बहुत मुश्किल था, ठीक है। सो दैट्स वाई ये लिटरेरी सोर्सेज की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं थी जितनी आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की थी, ठीक है। सो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज are more important to the study of ancient India. Okay, so started from literary sources. Literary sources are divided into two categories, that is indigenous and foreign. And in this indigenous sources are also divided into two categories, such as religious and secular. Under religious text, Brahminic, and these all are texts included in this indigenous sources. Okay, some Brahmic texts which including two texts such as Sutra texts, Smriti texts. Okay, these two texts were included in this. They were and there were four Samhita or Vedas, such as Rig Veda, Yadur Veda, Samved, Atharved. Okay, so composition time of such Vedas are also quite different. Okay, so let's get another point, ठीक है। फ्रॉम द हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से द ऋग्वेद एंड अथर्ववेद हैव मोर इम्पॉर्टेंस देन यजुर्वेद एंड सामवेद। ओके, ऋग्वेद को और अथर्ववेद को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था इन कंपैरिजन टू यजुर्वेद और सामवेद, उसके कंपैरिजन के हिसाब से। ओके, यजुर्वेद और सामवेद के कंपैरिजन के हिसाब से इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, ठीक है। The composition time of Brahmans was 1000 BC to 600 BC. Okay, the composition time of Arangyas was between 1000 BC to 600 BC. The composition time of Upanishads was between 1000 BC to 500 BC. Okay, and the best learning of Upanishads was Parvavidya. Okay, it's a very important point, so you must write on your notebook. The best learning of Upanishad is Paravidya, which means spiritual learning, ठीक है। So you must write on your notebook that this is a very important point that we are going to discuss on that Paravidya, which means spiritual learning. These things was get started from the Upanishads only. Okay, it was a very best form of learning of Upanishads. Okay, so the combined study of Brahmans and Upanishad best provides historical evidence from the King Prasist and King Bimbisar. Okay, the composite time of Vedangas were between 600 BC to 280. Okay, so composition time of epics of Ramayanas and Mahabharata is between 400 BC to 400 AD. ठीक है, सो रामायण एंड महाभारत के जो कंपोजिशन थे, उसके एपिक्स थे, ये किस टाइम पे लिखे गए थे? 400 BC से 400 AD के बीच में लिखे गए थे, ठीक है। सो लेट्स गेट सम आइडियाज अबाउट महाभारत एंड रामायणस। रामायणस वाज रिटन बाय वाल्मीकि, विच थ्रोज लाइट्स ऑन द political, social and religious conditions of India of that time. Okay, from the Ramayans we get the ideas how the people of that time lives in certain circumstances, how the people lives in such conditions. Okay, by politically and socially and religious. Okay, this books also gives us informations. This books also provides informations about the origin and development of जनपद्स. Okay, ये जो 16 जनपद्स जो बाद में जाके स्टैब्लिश होते हैं आफ्टर मौर्यंस, और मौर्यंस से पहले भी जो जब धनानंद के बाद, जब धनानंद जिस टाइम पे रूल कर रहा था कंट्री पे, ठीक है, उस टाइम पे जनपद्स स्टैब्लिश्ड होते हैं, स्टैब्लिश्ड उससे पहले भी होते हैं कुछ जनपद्स, लेकिन कितने जनपद देवर 16 जनपद स्टैब्लिश्ड एट दैट टाइम, ठीक है। उस कैसे वो उनका कैसे ऑरिजिन हुआ, क्या किस तरह के उनकी डेवलपमेंट्स हुई, वी विल गोइंग टू स्टडी इन आवर अपकमिंग वीडियोस। ओके, सो the next Mahabharat, which was written by Ved Vyas, ठीक है, which gives light on the political, it also gives a light on political, religious conditions of India of that time. Okay, in this extensive form of Mahabharat wars, which was fought around 950 BC to 950 BC between Kauravas and Pandavas, ठीक है। This was the war which held around 950 BC, ठीक है, between Kauravas and Pandavas. Okay, so in this only
The Mahabharat war was founded, that's not founded in Bharat, India. Okay, Giriraj was the capital of Magad. Okay, so the composition time of Purans in 400 BC, in 400 BC to 400 AD. The Purans throws lights on the histories of India from the very beginning to Gupta period. ठीक है, हम लोग ये इसमें ये देखेंगे कि पुरान्स क्या है. ये हमको ये बताता है कि हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताता है. कब से? बहुत ही मतलब वेरी बिगनिंग से, शुरू से गुप्ता पीरियड तक. ये हमको पुराण से हमें सीखने को मिलता है. जनरली पुरान्स हैव 5 सेगमेंट, 5 सेगमेंट्स में पुरान्स को पुरान्स डिवाइडेड हैं. जैसे कि सर्गा, सर्गा को हम लोग बोलते हैं क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स. सर्गा इज ऑल्सो, सर्गा का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्गा? विच इज मीनिंग ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स. ठीक है. प्रतिसर्गा, प्रतिसर्गा को हम रिक्रिएशन बोलते हैं. रिक्रिएशन मीनिंग क्रिएशन आफ्टर क्रिएशन. ठीक है, उसको हम लोग रिक्रिएशन बोलते हैं. वंशा, वंशा को हम लोग बोलते हैं जियोनोलॉजी ऑफ द गॉड्स एंड सेजेस. सेजेस मीन्स साधु जिसको बोलते हैं हम लोग. ओके, उसको हम लोग सेजेस बोलते हैं. ठीक है. मानवतार, मानवतार को एपिक्स ऑफ मानु. ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं एपिक्स ऑफ मानु. एंड द लास्ट वन इज वंश संचरित्रम. ठीक है, वंश सचित्रम. ठीक है, वंश सचित्रम. ओके, इट मीन्स द नरेटिव्स ऑफ एंशिएंट डायनेस्टीज. ठीक है. So in some of the Purans, Vansancharitrams was not included, like in only Purans where Sancharitrams were included, like such as Matsya, Bhagvat, Vishnu, Vayu, Brahma, Vaishwas Purans. ठीक है, and Garud Purans. These are all the Purans which are included with Vansancharitram. ठीक है. And now we are going to study about Buddhist text. Buddhist text which was divided into 2 categories, that is Pali and Anupali. ठीक है. Amongst the Pali texts, Tripitika. ठीक है, Tripitika. One of the very famous, one of the very important texts was that Milind Panno. Milind Panno was a very important text of that time. Okay, which get importance over there. ठीक है. Vinayak Pittika, which contains the disciplinary rules and regulations for leading a monastic life. Okay, दिस टेक्स्ट विनायक पितिका, इसमें डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताते थे कि मोनेस्टिक लाइफ को कैसे लीड करते हैं. ओके, लीड किया जाएगा. ओके, सुत्त पिटिका इज द लार्जेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ अमंग त्रिपितिका. त्रिपितिका के हिसाब से जो सूत्र पितिका है, हिसाब से नहीं, त्रिपितिका के साथ साथ जो सूत्र पितिका है, इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है. ठीक है. ओके, सो जो अभिधम्म पितिका विच डील्स विद द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धा इन अ सोशलिस्टिक मैनर. डॉक्ट्रिन हियर इट मीन्स principal learnings. Okay, learnings of Buddha in socialistic manners. Okay, so we have the deep ones, the Maha ones, which were compiled in Sri Lanka. Okay, through these texts contain the history of Sri Lanka. ये टेक्सेस क्या बताते हैं? श्रीलंका की हिस्ट्रीज बताते हैं. बट दिस टेक्सेस थ्रोज लाइट एन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ऑल्सो. ओके, सो दे वर हेल्पफुल टू कंस्ट्रक्ट अ मौर्यन हिस्ट्री. ओके, these are very helpful. So originally the Milind Panno, the question of Milind. Milind is the word which came from Menander. Menanders is the rulers of Indo-Greek. Okay, he was a ruler. And Milind Panno which came from Menander only. Okay, so among Anupali texts, the Divya Vandan and the Lalit Vistar was the important text. ठीक है. The Divya Vandans which contains the histories of later Mauryan kings. ठीक है. दिव्या वंदन्स क्या लेकर क्या इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है? इसके अंदर लेटर मौर्यन किंग्स जो है और सुंगास किंग्स हैं, और जो गौतम बुद्ध थे हमारे, उनकी जो स्टोरीज, उनकी जो लाइव्स है. ठीक है, लाइफ के बारे में इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है. ओके, सो and now we are going to study on about Jan texts. Jan texts which throws lights on religious and social condition of that time. ठीक है. Jan texts क्या किया? अब Jan texts के बारे में पढ़ते हैं. what was the importance of this texts. Okay, so the Jan texts
वर इवेंचुअली कंपाइल इन 6th century. ओके, 6th century में इसको कंपाइल किया गया था. ठीक है. अमंग जैन टेक्सेस देयर वर 12 अंगाज वर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस जैन टेक्सेस. 12 angas we have to study. We are going to study about 12 angas, okay, because it's very important. So the first was Acharanga Sutra. ठीक है. Acharanga Sutra was, it's contained disciplinary rules and regulations for Jain monks. Okay. Second was Bhagavati Sutra, which throws lights on the life of Mahavira and contains the list of 16 महाजनपद. हमने आपको बताया जैसे कि 16 जनपद बाद में जाके स्टैब्लिश्ड होते हैं आफ्टर, मतलब धनानंद के टाइम पे, जब धनानंद रूल कर रहा होता है उस टाइम पे, नंदा डायनेस्टी जब चलती है, तो उसके बारे में हमें इससे भगवती सूत्रा से पता चलता है. और ये लाइफ, महावीरा के लाइफ स्पैन के बारे में भी बताता है कि क्या क्या उनकी टीचिंग्स थी, क्या क्या उनकी कैसे उनकी लाइफ आगे थी. ठीक है. नम धम्मा कथा सूत्रा. द नेक्स्ट अंगाज व नम धम्मा कथा सूत्रा. इट कंटेन्स द प्रीचिंग ऑफ महावीरा. महावीरा की क्या प्रीचिंग्स थी, क्या टीचिंग्स थी उनकी, इसके बारे में हमें इस सूत्र से पता चलता है, इस अंगाज से पता चलता है. एंड द अंतगंधासो contains the life stories of famous monk. ठीक है. अंतगंधासो it which contains the life stories of famous Jain monks. Okay. Viva Gayusyam Sutra, which contains the discussion of karma phala, which is the fruit of action. Okay. Bahadra Bahu Charitra, which contains the life sketch of the Jain Buddha. Okay. So here are some of the angas. Okay. So some of the angas which were important, it has given here only. Okay. So let's get study from again historical texts. Okay. Although there is no such texts in ancient India that can be properly called historical texts, but almost every text had written in literary and religious colors. But there are certain texts, ठीक है, such as Kautilya. As we all know, Kautilya. Who is Kautilya? Kautilya, which is also named by Vishnugupta and Chanakya. ठीक है. Who have written one book, that is Arthashastra, which was compiled in 4th century BC. Okay. It gives not only a detailed information regarding to the system of administration, but also it gives an ideas of social and religious life of the people of that time. Okay. ये ना ही एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में बताता है, अर्थशास्त्र के बारे में आप जब आप पढ़िएगा तो वो बुक ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ एक हमें एडमिनिस्ट्रेशंस, कैसे सिस्टम चलता है, कैसे गवर्नमेंट्स को, कैसे किंग मेकिंग्स के प्रोसेस है उसके अंदर. ठीक है. कैसे रूल, हमें कैसे राजपाट को चलाना है, उसके अंदर वो दिया हुआ है. तो इस कौटिल्य अर्थशास्त्र में ये भी ना ही सिर्फ यही दिया हुआ है, बल्कि कुछ आइडियाज़ ये भी है रिलेटेड टू द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम. ओके. सो the best example of the earliest historical writing is provided by राजतरंगी. ठीक है. हिस्टोरिकल राइटिंग किससे हमें राजतरंगी से मिला, जो रिटन बाय कल्हाना से लिखा गया था 12th century AD में. ओके. एंड द स्टिंग ऑफ बायोग्राफी अ किंग ऑफ कश्मीर. इट्स अ बायोग्राफी ऑफ अ किंग ऑफ कश्मीर. ओके. ये किंग के कश्मीर के किंग्स की बायोग्राफी के बारे में था. ओके. दिस इज द ओनली हिस्टोरिकल वर्क्स प्रॉपरली सो कॉल्ड written by Kalhana in 12th century AD. This is Rajtarangi, which deals with the history of Kashmir from the earliest time up to the date of composition of that work. Okay. So the chronicles of these are all the important things which had happened. So let's move on to some historical texts. Historical texts, so important were Kalidas, who have written one book, Malvika Agnimitra. Okay. It's a play drama books, ठीक है, which is written by him only. It provide informations about the political conditions of Sunga dynasty and previous royal dynasties. ठीक है. ये सुंगा डायनेस्टिक्स, जो कि सुंगा डायनेस्टी जैसे कि आप सुंगा डायनेस्टी का जो रूलर था, जो उसका फाउंडर था, कौन था? पुष्यमित्र सुंगा. वो इस्टेब्लिश द सुंगा डायनेस्टी. ओके. उसने क्या किया था, उसके बारे में, उसकी पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में इस बुक्स में डिटेल इन्फॉर्मेशंस में दिया हुआ है. ठीक है. और उसके जो प्रीवियस रॉयल डायनेस्टीज थी, ठीक है,
जैसे कि उसने किसको मार के, किस किंग को मारकर उसने अपना जो शुंगा डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया था। पुष्यमित्र ने अपने मिनिस्टर को ही, उसने अपने मिनिस्टर को मार के एक पुष्यमित्र शुंगा ने अपने डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। तो इसके पूरे डिटेल कौन कौन सी डायनेस्टीज, प्रीवियस डायनेस्टीज, रॉयल डायनेस्टीज थी, वो उसके बारे में इसमें डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है। विशाखा दत्ता की एक बुक्स है मुद्रा राक्षस, विच इज़ बेसिकली अ ड्रामा बुक्स बट कंटेन्स द descriptions of Chandragupta Maurya and his minister Chanakya, okay, and some contemporary rulers. It describes how Chandragupta Maurya gets Chanakya assistance to overthrow the Nandas, okay. उस बुक्स में ना ही विशाखा दत्त की जो बुक्स है मुद्रा राक्षस, इट गिव्स डिटेल डिस्क्रिप्शंस ऑफ अबाउट चंद्रगुप्त मौर्याज एंड मिनिस्टर चाणक्याज एंड कंटेम्प्रेरी किंग्स, ओके। इस बुक्स में ये पूरा ये चीज़ दिया हुआ है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्याज को उसने असिस्ट किया, मतलब कि इट डिस्क्राइब्स ऑल अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्याज, हाउ चंद्रगुप्त मौर्याज गेट चाणक्याज असिस्टेंस टू ओवरथ्रो द नंदाज, ठीक है। एज जैसे कि चंदा मतलब नंदा डायनेस्टी उस टाइम पे रूल कर रही थी, तो नंदा डायनेस्टी रूलर था जो धनानंद, ही वॉज अ वेरी क्रूल रूलर, ठीक है, हु रूल्ड ओवर at that time, ठीक है। So after that when Chanakya get humiliated from the Dhananand, so at that time he thought that he will destroy his dynasty, and so इसके बारे में पूरी कहानी इस हमें इसमें विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में दी हुई है, ठीक है। So after we will study this in upcoming videos only, okay. So by some of the biographical texts are भाना भट्टा हु कंपोज हर्ष चरित्र, ठीक है। भाना भट्टा ने क्या किया था, हर्ष चरित्र को कंपोज किया था, विच इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ पैट्रन किंग्स हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन के बेसिस, हर्षवर्धन की लाइफ्स के बारे में इसमें दिया हुआ है, विच इज़ इन 620 AD, ओके। इट इज़ द अर्लीस्ट अवेलेबल बायोलॉजिकल टेक्स्ट इन इंडिया, ठीक है। इट इज़ रिटन इन संस्कृत, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, जो कि 8 चैप्टर्स में बटा हुआ है, ओके। द फर्स्ट 3 चैप्टर्स विच कंटेन ऑटोग्राफी ऑफ बानभट्टा, ठीक है। बानभट्टा के बारे में फर्स्ट 3 चैप्टर्स में लिखा है, एंड रेस्ट 5 कंटेन्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है। उसने 8 चैप्टर्स में क्या किया था, इसके जो बुक्स थे 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड थे, जो कि फर्स्ट 3 चैप्टर्स में उसकी ऑटोग्राफी थी, राइटर्स जो बानभट्टा ने लिखा था उसके बारे में ही लिखा हुआ था, व्हाट वाज हिज लाइफ स्पेन्स ऑफ लाइफ पीरियड्स ऑफ बिटवीन ऑफ हर्ष बानभट्टा, ठीक है। और जो रेस्ट 5 चैप्टर्स थे वो हर्षवर्धन के बारे में इसने बताया थ्रू आउट, ठीक है। उसके कोड्स के बारे में, उसके एक्सीलेंट मतलब एक्सीलेंट्स आइडियाज़ दिया उन्होंने, ठीक है। सो and next one is the foreign sources. Indigenous sources can be supplemented, supplement किया जाता था foreign sources के द्वारा, ठीक है। The writing of foreign travelers and chronicles provides venerable sources of ancient India, ठीक है। बहुत सारे venerable sources प्रोवाइड करते थे एंसेंट इंडिया के लिए, टू इंडिया ग्रीक्स लाइक सच ए चाइनीज, तिब्बतियन, अरेबियंस, विजिटर, merchants. These are all the such some travelers who came and just write about the histories of India, okay. So we'll study we will study in our next videos what were the thinkings of the Greek writers in our for our the history of India, okay. So for today's only for today's thanks for today's, and that's it for today's, okay. Thanks for watching our videos, and to forgive me if I made any mistakes, okay. And so we have started this channel to get the informations as much as possible as I, मतलब कि जितना हम मेरे से जितना हो सकेगा I will provide this information to you, okay. So forgive me if I made any mistakes, okay. So thanks for watching the videos, and do likes and subscribe our channel. Don't forget to like and subscribe, okay. So bye bye.